Hi, good morning everybody. So, now my dear students, today we are going to discuss our chapter how, when and where. So, beta, earlier I have shared two videos with you of this chapter and I have explained and discussed each and every paragraph of page number 1, page number 2 of the Ncert textbook. Okay, so now in this video we are moving ahead and we will discuss our rest of the chapter. Okay, so let's come. So now we will start from which dates. Okay, by what criteria do we choose a set of dates as important? The dates we select, the dates around which we compose our story of the past are not important on their own. They became vital because we focus on a particular set of events as important. If our focus of study changes, if we begin to look at new issues, a new set of dates will appear significant. Okay, so now my dear students, let me tell you that the dates that are mentioned in our history and the events that are related with each other, the dates are not so much important as the incidents are so much important. ठीक है, like कि बेटा जो उस समय पे इवेंट्स हुए थे ना, जो घटनाएं घटी थी, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानी जाती हैं इतिहास में, जितना कि तारीखें उतनी ज़्यादा नहीं मानी जाती. However, the dates are important and they are vital. They play a major role in history, but not more than the events. The importance of events is more than the importance of dates. Okay, now the dates become important just because of the importance of the events. Like we got independence on 15th August 1947. तो उस समय पे हमें भारत को आज़ादी मिली थी, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर है. बट वो किस दिन मिली थी? 15th अगस्त 1947 को, ये भी है. Okay, so now when did Indian Constitution was adopted? It was adopted on 26 January 1950. Okay, but suppose करके देखो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण फैक्टर कौन सा माना जाएगा? संविधान का अपनाना. ओके, स्वीकार किया गया था संविधान 26 जनवरी 1950 को. ओके, so like this factor of events that has played a major role in history carry a main importance with the date also. Okay, now they became vital because we focus on a particular set of events as important. क्योंकि जब हम एक पर्टिकुलर इवेंट्स पे फोकस करते हैं, मतलब कि भाई उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ऐसे हुआ था कि भाई लाइक सपोज इन द मौर्यन एम्पायर, इन द मगध एम्पायर, इन द मुगल पीरियड. ओके, सो सच थिंग्स वाज हैपेंड, सो दैट पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम आल्सो बिकम इम्पोर्टेंट. वो सेंचुरी भी या वो टाइम पीरियड भी उतना ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, बिकॉज वो जितनी भी इवेंट्स हुए थे वो सभी उसी सेंचुरी में हुए थे. ओके, सो नाउ consider an example in the histories written by the British historians in India. The rule of each governor general was important. Okay, now we all know that the Britishers ruled India almost for 300 years, and when they have ruled for a particular time period, they have their governor generals in India who were their administrators and who were representing the British East India Army or company, and they were ruling our India. Okay beta, so now every governor general has their own importance, has their own policy of administration and running down the system. Okay, so now these histories began with the rule of the first governor general Warren Hastings and ended with the last viceroy Lord Mountbatten. Okay, so now here is an important question for you. The first Governor General of India was Warren Hastings. कौन थे? Warren Hastings. Who was the first Governor General of India in India? Warren Hastings, and he was appointed as the Governor General of India in 1773. कब अपॉइंट किए गए थे? In 1773 में. Okay, so now tell me, who is the last viceroy of India?
लॉर्ड माउंटबेटन, ओके, लॉर्ड माउंटबेटन, ओके बेटा। लॉर्ड माउंटबेटन के साथ एक और क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, वो क्वेश्चन है हु इज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? Lord Mountbatten, because independence we got on 15th August 1947, and after independence also Lord Mountbatten remained the वायसराय फॉर सम मंथ्स, ओके। आज़ादी के बाद भी लॉर्ड माउंटबेटन भारत के वायसराय रहे थे कुछ समय तक, ओके। सो ही इज आल्सो कॉल्ड एज द फर्स्ट वायसराय ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया, ओके बेटा। सो you will note down these two MCQ questions. First, Governor General is Warren Hastings, and he was appointed in 1773. And for the last Viceroy of the India was Lord Mountbatten, and the first Viceroy of independent India is the Lord Mountbatten. In separate chapters, we read about the deaths of others: Hastings, Wellesley, Banting, Dalhousie, Canning, Lawrence, Lytton, Ripon, Curzon, Harding, Irwin. Okay, so beta, these all are the governor generals of India who ruled from the side of ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ये वो हैं बेटा जिन्होंने इंडिया के ऊपर शासन किया था, और ये किसको रिप्रेजेंट करते थे? ये रिप्रेजेंट करते थे ईस्ट इंडिया कंपनी को, ओके। सो इट एंड ये सी द हेस्टिंग, वेल्सले, बेंटिंग, डलहौजी, कैनिंग, लॉरेंस, लिटन, रिपन, कर्जन, हार्डिंग, इरविन, all they were different in nature, all they have different policies, different administrative systems, and different policies for governing the India, okay. It was a seemingly never ending succession of governor generals and viceroy. ये बेटा एक ऐसा पर्सनल चल पड़ा था, ऐसी प्रक्रिया भारत में चल पड़ी थी कि जो कि आज तक चली आ रही है। एज वी ऑल नो डेट एवरी स्टेट हैज अ गवर्नर, है ना। हमारे में अब जैसे इन दिल्ली द लेफ्टिनेंट गवर्नर is Mr. Anil Bezal, okay. Now every state, every union territory has a governor. So बेटा ये सोच के देखो, ये प्रक्रिया अंग्रेजों के शासन काल से चली आ रही थी और आज तक चल रही है, गवर्नर जनरल्स की और वाइसराइज की, ओके। सो ऑल द डेट्स इन these history books were linked to these personalities, to their activities, policies, achievements. It was as if there was nothing outside their lives that was important for us to know. The chronology of their lives marked the different chapters of the history of British India. Okay, so now, my dear students, every governor general has done something relevant, something important with his own innovative and creative skills, and run his or the Indian kingdom, Indian towns, cities, provinces, constituencies, and governed them really well. So उनके काम काज को बेटा, उनकी पॉलिसीज को, उनके कल्चर को, उनके ट्रेडिशन को, उनके काम करने के तरीके को, उनके शक्ति को, उन सभी के जो उन्होंने गवर्निंग के टाइम पे जो अपना जीवन भारत में व्यतीत किया है, वो हिस्ट्री की बुक्स में दर्ज है। और वो हिस्ट्री की बुक्स किसने लिखी हैं? वो हिस्ट्री की बुक्स बेटा ब्रिटिश पोइट्स ने ही लिखी हैं। ऑल दोज हिस्ट्री बुक्स वर रिटन डाउन बाय द British poets or British writers, just to make these people famous, and so that in their own country, in Britain, England, the name of such kind of governor generals who ruled the India was still alive. ओके, आज भी इन लोगों के नाम वहाँ पे प्रचलित हैं, इन लोगों की किताबें वहाँ पे पढ़ी जाती हैं, ठीक है बेटा। सो नाउ can we not write about the history of this period in a different way? How do we focus on the activities of different groups and classes in Indian society within the format of this history of governor generals? How can you say, we can say, क्या हम
इन इतिहासकारों की, ये जो गवर्नर जनरल वाइस रहे थे बेटा, क्या इनके इतिहास, इनके लिखे हुए उनको दोबारा पढ़ के हम नहीं लिख सकते? हम लिख सकते हैं ना। सपोज इफ वी टेक एन एग्जांपल ऑफ Warren Hastings, if we read about the book on Warren Hastings, then can't you think after studying the book we can write ना easily, कि हमें ये अच्छे से पता चल जाएगा कि उनको कब गवर्नर जनरल बनाया गया था, कब उनको अच्छे से काम काज आया, कब उन्होंने कौन सी पॉलिसियाँ अप्लाई की, कौन से कानून इम्प्लीमेंट किए, कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन सेटअप किए, कौन से डिसिप्लिन मैनर में काम किया उन्होंने। ओके, सो हम वी कैन राइट। एंड हाउ डू वी फोकस ऑन द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट ग्रुप एंड क्लासेस इन इंडियन सोसाइटी विद इन द फॉर्मेट ऑफ दिस हिस्ट्री ऑफ गवर्नर जनरल्स। जब ये प्रक्रिया गवर्नर जनरल्स की चल रही थी भारत में, तो जो हमारे डिफरेंट ग्रुप्स थे, क्लासेस थे, डिफरेंट ग्रुप्स एंड क्लासेस हेयर मीन्स बेटा like the people who are living in a particular land on a particular region, कि भाई ये सोसाइटी एजुकेटेड है, ये सोसाइटी हिंदू है, ये सोसाइटी मुस्लिम्स की है, ये सोसाइटी क्रिश्चियंस की है, ये सोसाइटी सिख की है। Okay, so such kind of classes were different from each other, and so it was a good task for them to rule, because Britishers का पॉलिसी क्या थी बेटा? डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो। ओके, सो दैट्स व्हाई दे वर सक्सेसफुल। नाउ when we write history or a story, we divide it into chapters. As we all know that when we write anything, we divide it into parts. हम उनको भाग में बांट के लिखते हैं, और जब हम उनको पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो पार्ट्स में डिवाइड करने के साथ साथ हम उनको ऐसे लेके चलते हैं कि भाई हर एक प्लॉट, हर एक थीम अच्छे से कवर हो जाए, हर एक स्टोरी अच्छे से कंप्लीट हो, और फिर उस स्टोरी के बाद दूसरा पार्ट स्टार्ट हो। ओके, अब फॉर एग्जांपल ऐसा तो नहीं है ना कि मतलब आप पहले फर्स्ट क्लास में थे, उसके बाद आप डायरेक्ट फिफ्थ क्लास में आ गए, नहीं ना। आप फर्स्ट के बाद सेकंड में आए, थर्ड में आए, फोर्थ में आए, फिफ्थ में आए, सिक्स्थ में आए, सेवन्थ में आए, और अब एट्थ में आए। तो ये क्या है, एक हर एक चीज सीक्वेंस फॉलो करती है। इन द सेम वे बेटा, व्हेन वी राइट अ स्टोरी इन हिस्ट्री, इट इज आल्सो फॉलो अ प्रॉपर सीक्वेंस एंड मैनर। ओके, व्हाई डू वी डू दिस? It is to give each chapter some coherence, or it is to tell a story in a way that makes some sense and can be followed. In the process, we focus only on those events that help us to give shape to the story we are telling. In the histories that revolve around the life of British Governor Generals, the activities of Indian simples do not fit, they have no space. What then we do? Clearly, we need another format for our history. This would mean that the old dates will no longer have the significance they earlier had. A new set of dates will become more important for us to know. Okay. So now, my dear students, when the histories of the work of the viceroys and governor generals were being written down, so in those books only the format, only the story of the characters of the governor generals was developed only. ठीक है, कि भाई सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में लिखा जाता था बेटा? सिर्फ और सिर्फ गवर्नर जनरल्स के बारे में लिखा जाता था। और वो गवर्नर जनरल्स कौन होते थे? वो गवर्नर जनरल्स खुद ब्रिटिश पीपल होते थे। सो we can say that the British writers, the British poets wrote only about of their own men and women. Okay, वो सिर्फ अपने लोगों के बारे में ही किताबों में लिखते थे, जो एडमिनिस्ट्रेटर्स उनके इंडिया में रूल कर रहे थे। ओके, but our societies, our classes, our people, our own land, culture, tradition were not being written down in their books and notebooks. So just to make our own books, just to make our own histories, so people start writing about our own culture, about our own people, about their own survival in that period of time when the governor generals and viceroy was गवर्निंग अस। ठीक है, सो उसके साथ जैसे हमने अपने बारे में, अपने लोगों के बारे में लिखना शुरू किया, वैसे ही इन द सेम पीरियड ऑफ टाइम
वो तारीखें ज़्यादा महत्वपूर्ण होने लगी, वो डेट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने लगी जो हमसे जुड़ने लगी. ओके, द डेट्स हु आर डायरेक्टली रिलेटेड टू each other, they start developing with the time period your own. ठीक है बेटा, and so that's why the new dates became very much important and crucial to remember. Okay, I hope this is very much clear to you. And now let me show you the Warren Hastings. He is Warren Hastings. He became the first Governor General of India in 1773. I told you na just before minutes. Warren Hastings became the first Governor General of India in 1773. Okay, while history books narrated the deeds of Governor Generals, biographies glorified them as person and paintings projected them as powerful figures. कि बेटा जब हिस्ट्री बुक्स लिखी जाती थी तो उन समय इन्हीं का जिक्र होता था. ये जितने भी गवर्नर जनरल थे सिर्फ इन्हीं के बारे में लिखा जाता था, और जितना भी लिखा जाता था ये सब उनसे उनकी ग्लोरीज को, उनकी पॉलिसीज़ को, एडमिनिस्ट्रेटर्स को और उनके पावरफुल फिगर्स को दर्शाता था. मतलब उनकी एक क्लास को, उनके एक स्टैंडर्ड को दिखाता था कि हाँ ये कुछ है. ओके, इनके हाथ में पावर है. ओके, नाउ हाउ डू वी periodize. Okay, now we will study the facts and concept period wise. Okay, कि कौन से पीरियड में क्या हुआ था. ओके बेटा, कौन से सेंचुरी में क्या हुआ था. In 1817, James Mill, a Scottish economist and a political philosopher, published a massive 3-volume work, A History of British India. Okay, so now a history of British India was written by James Mill in 1817. So this is your one question. Okay, and now you will note it down in your notebook. Who wrote the book A History of British India? James Mill. And when did he wrote it? In 1817. Who was James Mill? He was a Scottish, Scotland से आया था, इकोनॉमिस्ट था. इकोनॉमिस्ट इन हिंदी भी से अर्थशास्त्री था जिसको इकोनॉमी का ज्ञान था और राजनीतिक का भी ज्ञान था. ही वॉज अ स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिकल फिलोसोफर. ओके, इन दिस ही डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड्स. और जेम्स मिल ने अपनी 3-वॉल्यूम वर्क में इन हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया ही डिवाइडेड हिस्ट्री ऑफ इंडिया इनटू 3 पीरियड्स. और उन्होंने 3 भाग में बांटा. हिंदू, पहले हिंदू में, सेकंड मुस्लिम पीरियड, थर्ड द ब्रिटिश पीरियड. ओके, as we all know that when in India the life was started, the culture in India was Hindu. Then with the coming of the Mongols, the coming of Mughals, the coming of people from Turkey, Afghanistan, okay, from Iran, Iraq, from such kind of places, the Muslim culture introduced in India. And when the Britishers came, it was called as the British period. So this periodization came to be widely accepted, और ये बिल्कुल सच कहा गया था और सबने एक्सेप्ट भी किया इसको. Can you think of any problem with this, the way of looking at Indian history? क्या ये आप इन सब को देख के समझ सकते हो कि इन सब के संज्ञान में हम इंडियन हिस्ट्री को पढ़ सकते हैं? Why do we try and divide history into different periods? हम हिस्ट्री को डिवाइड भागों में क्यों बांटते हैं? Because we do so in an attempt to capture the characteristics of a time. हम इसलिए करते हैं बेटा क्योंकि हमें एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के बारे में जानने को मिल जाए, समझने को मिल जाए और उन सब चीज़ों की पहचान हमें अच्छे से हो जाए. इट्स सेंट्रल फीचर्स एज दे अपीयर टू अस. और उस समय पे चीज़ें कैसे दिखाई देती थी, कैसे प्रचलित थी, उन सब का ज्ञान हमें हो जाए. सो द टर्म्स थ्रू विच वी पीरियडाइज, दैट इज डेमोक्रेट, the difference between periods became important.
And when we divide history into periods, and each period became important to know, to understand, with culture, tradition and policies of administration. और जैसे कि हमने हिस्ट्री को भागों में बांटना शुरू किया, वैसे ही हर एक भाग इंपॉर्टेंट बनता चला गया. ओके, दे रिफ्लेक्ट आवर आइडियाज अबाउट दी पास्ट. और हर भाग हमें हमारे आइडियाज को, व्यूज को, थॉट्स को, इतिहास के बारे में बताता है अच्छे से. ओके, दे शो हाउ वी सी द सिग्निफिकेंस ऑफ द चेंज फ्रॉम वन पीरियड टू द नेक्स्ट. और हमें इस चीज़ के बारे पे सोचने पे ये हमें मजबूर करता है कि पहले क्या हुआ था और अब आगे क्या होगा. ओके, हम जानने को इच्छुक हो जाते हैं ना. सपोज बेटा हम एक कॉमिक पढ़ रहे हैं, आप, आई होप आपने बचपन में नागराज की कॉमिक्स पढ़ी होंगी. एंड इट हैज़ ऑलमोस्ट 37 चैप्टर्स. ओके, एंड एवरी चैप्टर एंड्स विद अ स्टोरी, विद अ quest to know कि आगे क्या हुआ होगा, right? And in the stories of Spider-Man, Batman, Superman also the same thing is happened, like what will happen next. So मतलब जो ये क्यूरियोसिटी होती थी ना बेटा कि भाई अब आगे क्या होगा, आज तक तो इतना हो गया, ठीक है, ये हमने जान लिया, समझ लिया, पहचान लिया, बट अब आगे क्या होगा. ओके, so Mill thought that all Asian societies were at a lower level of civilization than Europe. According to his telling of history, before the British came to India, Hindu and Muslim despots ruled the country. Religious intolerance, caste, taboos, and superstitious practices dominated social life. Okay, so now Mill thought that Asian societies were at a lower level of civilization than Europe, because beta Europe was developed and well settled in every manner. The people over there were educated, they eat properly food, they dress themselves well, they have a standard, they have a class, they are really in good in nature, in views and in thoughts also, because they always talk about development. Okay, and in our Asian, the countries were not so much developed at that period of time, and the civilization were still at a lower level. Okay, according to his telling of history, before the British came to India, Hindu and Muslim despots ruled the country. जब ये ब्रिटिशर्स के भारत से आने से पहले भारत में किसका राज था? एक तरफ हिंदू राज करते थे और एक तरफ मुस्लिम राज करते थे. वी नो दैट द मुगल पीरियड वो क्या थे? मुस्लिम्स थे, एंड द राजपूत्स वो क्या थे? हिंदू. ओके, सो लाइक कि भी एक तरफ हिंदू फॉलो करते थे और एक तरफ मुस्लिम रूल करते थे. रिलीजियस इंटॉलरेंस मतलब भाई धर्म के आधार पे भारत बटा हुआ था. कास्ट टैबूज, और जातियां भी बहुत ज़्यादा बिखरी हुई थी, मतलब बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे जातियां बटी हुई थी. एंड सुपरस्टिशियस प्रैक्टिस डोमिनेटेड सोशल लाइफ, और मतलब जादू टोना, सुपरस्टिशियस की भाई ये भूत वगैरह, आत्मा वगैरह की बातें भी कही जाती थी और लोग इनमें विश्वास भी करते थे. Okay, so now this is all about beta of this second and third page, which dates and how do we paradise. In the next video we will continue our chapter, and I hope till here the concept is very much clear to you. So thank you.